So, dear students, welcome to the class of Masters of Business Management. And today we are going to talk on listening skills. And we will be dealing with what are the key ingredients of listening skills. When you talk of it, you will realize that listening is different from hearing. And hearing, how will you differentiate listening and hearing? Anybody, please? Sir, hearing refers to only listening, not feedback. And listening refers to paying attention and responding back is termed as listening. Anybody else? Anybody else? How do you look at listening, this term? Please let me know how you consider listening. Sir, listening is the ability to accurately receive message in communication process. How listening is different from hearing? Anyone, please? How do you look at listening as different from Yes, sir. hearing? Yes. Sir, in listen, you should be fully concentrate about what other people say. Yes. And in hearing? Sir, in hearing you, it is not compulsory to which you should concentrate. Only this is informal, like you can say something, anybody here or not. Okay. Anybody else would like to add something? Sir, listening also includes feedback, but hearing doesn't feedback. Hearing, in hearing, no feedback is required. Yes, sir. Oh, Sir, in listening, sir, feedback. listening is Yes, please. Keep speaking. sir, listening is to pay attention to sound to hear something with thoughtful attentions, and hearing is a process function of power of perceiving sounds. Anybody else would like to add something? Okay, let me tell something that there are 4 basic skills of language learning. They are known as LSRW, where L stands for listening, or S stands for anybody speaking, and R stands for R stands for Reading. The response. reading, Reading. and W stands for Writing. W stands for
Writing. Writing. Yes. So when you talk about these four terms, listening is the first language learning skills. And many scholars said a lot many things on the abilities of learning a language. Many scholars deliberated on the abilities of learning a language. And when you go for skills of language learning, you will find that there are four basic skills. Out of that, first is listening, second one is speaking, third one is reading, then writing. Why this sequence? This sequence is having a kind of movement, dynamism. When do we come in this world? We start listening. And then after that, it's a matter of chance that we are born in here, Bhojpuri speaking community. So naturally we will start catching the sounds and terms of Bhojpuri. Had we been born with Punjabi speaking community, so we start the opportunity of listening Punjabi. Had we been born in US, you might have started listening to American English. But since we are born in Hindi speaking community, so fairly we are having the exposure of, listening and hearing our own mother tongue. Punjabi, Gujarati, Marathi, it is applicable to all. So when you start talking about this listening, you will find that here are certain key points that we must be taking care of. And then we will start moving forward. Let us see that what can be the next point for our discussion. You will realize that listening is different. First realization is required that listening is different from hearing. Then let us move to the next point. That is, next point will be types of listening. First, you have a realization that listening is different from hearing. In hearing, no attention is required. So you can write over here that listening is equal to hearing plus attention. Got the point? आपको क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पे? Hearing plus attention is equal to listening. So that way you find that primary focus of this thing is hearing plus attention. If you reduce attention from hearing, so you will be hearing only. You will subtract attention. So you can hear any noise. You can hear, but you can listen only. You can hear any noise, but you can listen only where attention is required. So in a business communication, it is said that the better you will listen, the luckier you will get.
It's a quotation by Peter Murphy, who said that the more you will listen, the luckier you will get. But let us move a bit advance. I would like to write a quote here, signifying the importance of, and I would love you, any one of you, to read. Anyone? Yes, sir. Yes, please. Listening is the mother of all speaking. Very good. So will you remember this quotation? We Yes, can sir. we can't speak a word that we have never listened in our life. Sorry. We we need to have the exposure of that particular word that we wish to speak. So we have to concentrate over it, that we cannot speak. We don't have the ability to speak a word if a particular word we don't have that exposure. So you will find that this is how things become important. Listening remains the mother of all speaking. Now let us move to the next point, that types of speaking. Sorry, types of listening. Sir, Yes, please. sir, my friend is waiting in lobby. Sir, kindly allow her to enter. Yes, beta. Okay. I was more focused on the content of the lecture. So No probably, problem, sir. so, okay. I think added. They are added now. Thank you, sir. Okay, beta. So when we talk about Thank you, sir. types of listening, so here we will be adding something, that what could be the types of listening. Anyone would guess that what are the different types of listening? Anybody is having any idea? So active listening and passive listening. Very good. This is one division. This is one division, that active listening and passive listening. Passive listening and active listening, what is that? This is one division suggested by the scholars, active and passive listening. What do you mean by these types of listening if you focus on it? That what could be the then this is, you can say, one set of division. This is maybe, or you can say this is first division, where you said that active and passive listening. When you move beyond this, what could be the other type of listening, second type of division? What else could be? And how will you define active and passive listening? Anybody else? Or you yourself, please focus on it. Is active and passive listening. How will you? Sorry. Sir, in active listening, a person is committed by providing response and feedback. Okay. And active listening, your body responses are also important. In active listening,
Listeners gives the clues to the speaker that he is interested in listening. You got the point? That becomes the active listening. When you talk of passive listening means some of you, not regularly, someday in a lecture, you feel like a passive listener. What happens? What remains your mindset when you feel like a passive listener? When आप अपने आप पे गेस करिए, कभी कभी किसी एक विशेष लेक्चर में आप पैसिव लिसनर होते हैं, ये तो ऐसा सत्य है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, because every day you do not remain in the same mindset because of multiple reasons. So will you please try to locate that when you remain your passive listener? सर जब मॉर्निंग में क्लास रहती है तो हम लोग एक्टिव लिसनर रहते हैं, लेकिन वही क्लास अगर इवनिंग में सुबह से चलती रहे क्लास, तो जाते जाते हम लोग पैसिव लिसनिंग करने लगते हैं. यस, जाते जाते आप पैसिव लिसनर होने लगते हैं. सो यू फील कि द ग्राफ ऑफ रिसेप्शन जो ट्रांसमिट हो रहा है और उससे ट्रांसमीटर से जो रिसीवर तक आते आते चार्ज जो है घटने लगता है आपके ब्रेन का. इन अ वे मैसेज व्हेन यू स्टार्ट बिकॉज ऑफ फटीग, because of weather conditions, because of your mental conditions, because of noise that you find in sender message and receiver communication model, because of the presence of psychological noise, because of the presentation of physical noise. Clear? Now let us look at another division in the segment of types of listening. What is that? Second division, second kind of division. So you will find that first division will be in the second segment. You will find that first division will be partial listening. First division will be what? क्या आप पा रहे इसमें? First is partial. जैसे मान लो कुछ बच्चे जो लेट आए, so they are having exposure to partial listening. They are having exposure, they are listening partially. और वो एक पार्ट को लिसन कर पाए. Many a times because of certain condition we listen not the full content. Reason may be any or many. Don't go on the reason. Reason may be many, but you could listen only to the parting. Listening means partial means amsik shravan. But there is another type of listening, that is what you might have seen the term coming over the screen. What is this? Anyone should read? Selective What listening. is selective listening? We select that what we like, or what is more important, or what is more valuable. Sometimes you guess that this subject is very, very important for your life. So your level of attention of listening increases over there. And where in many conditions you feel that this is not so serious thing, so you start reducing your level of attention. Let us come to this point. So when you will be selective, while even reading, if you are reading your syllabus and you find that this topic is very, very important, so you start feeling like very, very selective, and you start feeling adopting the selection approach.
So selective listening, partial and selective listening, can anybody differentiate how partial listening is different from selective listening? Anyone from your side? Please. Anyone from your side, please let me know that how partial listening is different from selective listening. Sir, selective listening refers to the like and interest of the people, but partial listening is for the only just your listening, not paying full attention. So you're not audible. Partial listening is only when you are paying attention. What are you telling? Please. Sir, selective listening refers to the like and valuable and interest of the people, but partial listening is refers to the you are listening only, not paying full attention. You are not paying full attention. That becomes the partial listening. Okay. Here, partial, not attention. We have already discussed, beta, that here listening and hearing. आप थोड़ा सा इधर confusion है. अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया. Here we were talking about listening and hearing. So you see that listening is equal to hearing plus attention. Clear? Attention already came over here. Partial is what? That a speech is going on for 1 hour. You decided or you could attend for 10 minutes. Or you attended first part or second part or middle. You came first, but you didn't listen to the complete. So partial means having 5%, 10%, etc. You happens to listen only part, not the full. Got the point? Now partial is clear to you? Yes, sir. किसी कारण बस आपने या चाहे जैसे भी उस स्पीच के पार्ट को ही सुना. अब आप ये समझ सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है आधे पार्शियल में आप कुछ पार्ट, चाहे वहां होते हुए भी कुछ मानसिक कारण हो, आपका टेलीफोन आ गया या फिर व्हाटसोएवर बैरियर, you consider one part as important and you focus only that part. But selective में क्या है? आपकी चॉइस है. जैसे मान लो आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो और आपको अचानक से कोई ऐसी लाइन आ गई वहां पे जिसको आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो आप उसको सेलेक्ट किए हुए हो कि ये वाला पार्ट मेरे को ध्यान से सुनना है. सिलेक्शन इज योर. आपने पहले से सिलेक्शन कर लिया है. तो अभी आपको पार्शियल और सेलेक्टिव में अंतर आया. जो आप सिलेक्शन में क्या है? इंपॉर्टेंस है बेस्ड ऑन दी. हम लिख भी दे रहे हैं, चलो. सेलेक्टिव क्या होता है? बेस्ड ऑन दी चॉइस ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ लिसनर. अभी समझ में आया? जैसे मान लो एग्जाम में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है, तो लेक्चर चल रहा है, आप उस पॉइंट पे आते ही बहुत सेलेक्टिव हो जाते हो और यू स्टार्ट फोकसिंग स्पेशल अटेंशन. देन देयर कम्स partial, selective. Then there comes emotive listening. What is this? Emotive listening means what? Listening with emotions. Yes. अब इमोशन आपके कैसे कैसे हो सकते हैं? If you are listening with emotion, तो आपके इमोशन हो सकते हैं कि you may be sympathetic with listener.
You may be practicing sympathetic listening. You have sympathy with you are sympathetic with the listener. Sorry. Where your sympathies are attached, then you will find. और क्या इमोशन हो सकता है? सिंपैथी हो सकती है आपको while listening. बोलोगे सर लिसनिंग में कैसी सिंपैथी? So let me know कि we all are human being and emotions are integral part of our life. We just can't play like robot. Neither we can speak nor listen like a robot. We have to be naturally, whether we want or not, many a times our emotions are blended. But for being a trained listener, we need to focus on, this sympathetic type, or we need to focus on, or, so what way we should follow. When you become sympathetic, there is another term, listening. आप इसको भी प्रैक्टिस करते हैं. What is this? Sometimes you do not like the speaker. जैसे वो, suppose that you do not like the speaker, so by the time the speaker will start speaking, your listening mechanism will start preparing different thing, different frame of mind, and you will be antipathetic in the listening. So in certain situations, जैसे मान लो you are listening to your enemy, ठीक है, आपको ये खबर मिली और आपने उसके बारे में सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मन से क्या निकला? अच्छा हुआ. अगर आप एंटीपैथेटिक है तो. सिंपैथेटिक है तो यही खबर आपके दोस्त की मिली, भगवान ना करे, तो आपने क्या किया? अरे ऐसा कैसे हो गया? हाउ डिड इट हैपन? कब हुआ? कैसे हुआ? सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, योर रिस्पॉन्सेज आर, you are responsive and your responses are being framed. So when it comes to antipathy, there can be another emotion. You are neither too attached nor too, you can say, any kind of sympathy or antipathy. Your brain is like facing this emotion. क्या लिखा मैंने? फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी मेनी टाइम्स दे से, एक लोकोक्ति बोलते हैं, लोकल सेइंग है, क्या? जंगल में मोर नाचा मुझे क्या. कोई इंद्रिप होए हम. अब जैसे इलेक्शन चल रहा है, पीपल विल बी वेरी वेरी इमोटिव. आप लोग भी इमोटिव होंगे अभी. यू माइट बी लिसनिंग, अरे आज इन्होंने, योगी जी ने ये कहा, आज अखिलेश ने ये कहा. यू आर लिसनिंग लाइक एनीथिंग. ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? एंड देन आज उसका स्पीच तो सुनने लायक था. यू आर वेरी वेरी इमोशनल, कैरीड अवे विद द इमोशन, बट दैट इज नॉट अ गुड लिसनिंग. एपैथी, though there may be certain people who are highly interested in cricket, तो वो अगर क्रिकेट मिस भी कर गए तो न्यूज में भी वो क्रिकेट सुनना चाहते हैं. दे आर सो इमोटिव, सिंपैथेटिक विद स्पोर्ट्स, दे आर स्पोर्ट्स लविंग. उनको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है. तो उनका क्या हो जाता है, वो जब तक स्पोर्ट्स न्यूज नहीं आएगा तब तक दे आर, यू कैन से, काइंड ऑफ पैसिव लिसनर. जैसे ही स्पोर्ट्स आया वो कान खड़े हो गए उनके. देयर आर पीपल हु इन्वॉल्व, ज्यादा ऑडियंस आजकल पॉलिटिक्स में जा रही, तो पॉलिटिकल लिसनिंग वो कर रहे हैं, तो उसमें उनका सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी. दोज हु आर नॉन पॉलिटिकल पीपल, जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनके लिए कोई सीएम बने कोई चिंता की बात ही नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं. भारतीय परंपरा में प्राचीन काल में एक कहावत थी, बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत पुरानी कहावत है और शायद आपको
सुनने को ना मिली हो, जो हिस्ट्री पढ़ा होगा वही सुना होगा। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ ग्रुप में जो कभी लाइफ में हिस्ट्री पढ़ाया जाए सब्जेक्ट, हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में? एनीवन विथ हिस्ट्री बैकग्राउंड इन योर क्लास? चलो हम एक बहुत पुरानी कहावत सुना रहे हैं कि जैसे मान लो वो एपैथेटिक है टू दी प्रोसेस ऑफ हु इज गोइंग टू बी सीएम और हु इज नॉट गोइंग टू बी सीएम। तो क्या बोलते थे वैसे, राजा कौन बनेगा? तो जो उनके स्लेव होते थे या जो नौकर चाकर होते थे वो कहते थे कोई नृप होय हमें का हानि, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। क्या बोलते थे वो नौकरानियां, क्या कहती थी कि राजा कोई भी बने हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो नौकरानी के नौकरानी रहेंगे। चेरी बने, समझते हो ना, दासियां या जो है काम करने के लिए जो रखी गई है। सो इमोटिव लिसनिंग में उनका क्या एपैथी है कि राजा कौन बन रहा है, क्या कौन नहीं बन रहा है। एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल है इन रामायणा, देयर वाज अ लेडी मंथरा। मंथरा को बड़ा इंटरेस्ट था कि कौन राजा बनेगा, है कि नहीं? आप बोलिए। एक्सेप्ट शी वाज Yes, sir. लिसनिंग टू एवरीथिंग, एवरी मूवमेंट, एंड शी वाज फीडिंग। सो वहां पे क्या है, कोई नृप हुए हमें कहानी, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। So this is sympathetic, antipathetic, apathetic listening. Got the point? Then अब जो है आपने देखा कि सिंपैथेटिक लिसनिंग भी हो गया, एंटीपैथेटिक भी, एपैथेटिक। तो एपैथेटिक लिसनिंग एग्जांपल इज विद यू। Those who are not interested in politics, they will be apathetic to political news. Those who are not interested in cricket, they will be apathetic to the sport cricket news. Clear? Those who are having no interest in cricket, they will be apathetic listener for cricket news. Clear? Those who are interested in hockey, they will be sympathetic to the condition of hockey if the hockey is going down in comparison to cricket. ऐसा होता है नहीं होता है? पहले ये बताओ, ये तो थियरी हो गई, आप प्रैक्टिकली क्या Yes, पाते sir. हैं? होता है सर। Good. Let us move to the different another type of listening. What is this? ये तीनों ही अच्छी लिसनिंग नहीं है। सिंपैथी, एंटीपैथी, ये तीनों जो है आपका एक ये क्लस्टर है, और ये निगेटिव माना जाता है बेटा। ऑल थ्री आर निगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग। क्यों? आप बहुत सिंपैथेटिक होंगे, somebody will tell the frame a story, cook a story, like he is very painful, suffering to painful and situations and all that, और बड़ा ये इंडियन सोसाइटी में है दान पुण्य करने का। वो झूठी कहानी बनाएगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा। ठीक है, यू विल बी befooled बाय द पीपल। आपको जो है कहानी सुना के बेवकूफ बना लेगा। आप कहते कई बार कि यू माइट सी बेगर्स ओवर देयर and they cook some story and they start telling and then you pay them money, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो जाके ड्रिंक कर रहा है। by the time you start seeing the person that he is drinking, तो अल्कोहल। तो अब आपको क्या लग रहा है? बहुत सर बुरा लग रहा है, बिकॉज योर हार्ड अर्न मनी इज बीइंग मिसयूज्ड। यस बेटा, बोलो प्लीज। सर ये एपेथेटिक और एंटीपैथिक में मतलब मेन डिफरेंस क्या होता है? वेरी गुड। एंटीपैथी मैंने आपको उस स्पीकर से कोई टेस्ट ही नहीं है, नफरत है। और एपैथी मीन्स ना तो आपको नफरत है ना प्यार है, आप उदासीन है, अटेंशन यहां भी नहीं है। Yes, sir. आप क्या है? उदासीन है, एपैथी। जैसे मैंने बताया, एग्जांपल दिया, जंगल में मोर नाचा मुझे क्या। Yes, sir. किसी ने कोई खबर दी कि मान लो सर्बिया में जो है डायमंड की खान मिल गई, ठीक? Yes, sir. सिंपैथेटिक लिसनर होगा तो क्या कहेगा? पूरी और इंडिया में क्यों नहीं मिला? एंटीपैथेटिक होगा तो कहेगा कि उसी में आग लग जाती तो मजा आ जाता। Yes, sir.
Antipathetic will listen and his response will be like that. Apathetic listener Yes, होगा, sir. वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, उस न्यूज को कोई तवज्जो ही नहीं देगा. It is of not for, it is as if not for him. Clear? उसको Yes. बोलोगे भी जाके, उसे कान में भी बोलोगे तो बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है. Yes, Clear? sir. Yes. तो सर एक फ्रेंड लॉबी में, सर उसको अलाउ कर दीजिएगा, उनका नेट नहीं चल रहा. बेटा बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, अब नहीं अलाउ करें. Then apathetic listening. Then there will be next type of listening is जिसको कि बेस्ट प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट माना जाता है आपके लिए. और ये अभी तक के सारे डिस्कशन का सबसे, अभी मैंने बोला आप सेलेक्टिव हो जाओ, ठीक है ना. अभी तक अगर आप जो है पार्शियल थे तो अभी सेलेक्टिव हो जाओ. अभी तक आप जो है पैसिव लिसनिंग कर रहे थे तो अभी एक्टिव हो जाओ, ठीक है. ये कौन सा लिसनिंग है जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है या ह्यूमन बीइंग के लिए? यू गॉट इट? ये क्या लिखा मैंने? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डिजायर्ड काइंड ऑफ लिसनिंग फॉर प्रोफेशनल वर्ल्ड एंड बिजनेस वर्ल्ड और फॉर सीबीएम इज, अंडरलाइन कर दिया मैंने, पढ़िए इसे. Empathetic listening. यस, लिसन विथ empathy. What does it mean? What does it mean? कोई बोलो, कोई बच्चा बोलिए मेरे को. Sir, understanding the feeling of speaker. Anybody else? It means responding to the person fully, both emotionally and intellectually. Anybody else? बोलिए, anybody else should try? Yes, sir. So empathic listening is useful to help you see from other people's perspective. Okay. Anything else? Anything else? Yes, sir. What? So, as per Merriam-Webster, empathy means it is the action of understanding, being aware of, being sensitive to, and viciously experiencing the feelings, thoughts, and experience of another of the either of the past or the present without having the feelings, thoughts, and experience fully communicated in any other form objectively. So, sir, it means that if any person is having an empathy for for any other person or any other object, so he or she is not directly connected with it objectively via feelings or sensations, but he or she tries to understand that via getting its thought process. Okay, let me come to this part, that when you start telling empathetic listening, the meaning of exact literal meaning of this term is, putting your legs into others' shoes. What is that? Putting your legs into others' shoes. What does it mean? जाके पाँव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई. Got it? मीन्स इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो लिटरल मीनिंग है, मरियम वेबस्टर पे मत जाओ, इसका मीनिंग है लिटरल मीनिंग, पुटिंग योर
legs into others shoes. यहाँ पे ये जो जूता है ना, शू, ये it is indicator of the problem or situation. It is symbolic indicator of the situation. तो इसमें क्या है, in English there you will find a lot many idioms related to the shoes. इसमें बहुत सारे आपको इंग्लिश में मुहावरे मिलेंगे. वो like said that स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच में भी आता है कि वो कहते हैं कि वहां पे जब ये गए तो इस शिकागो स्पीच में, तो इन्होंने कहा कि इन इंडिया कोबलर्स एंड टेलर्स डू नॉट मेड पर्सनैलिटी. लेकिन आज जब आप मार्केट में जाते हो तो क्या होता है कि बाय द टाइम यू रीच इन द मार्केट और फॉर परचेजिंग शूज, तो इन सर्टेन केसेस वो जूते का प्राइस आपके कपड़ों से भी ज्यादा होता है नहीं होता है? प्लीज, होता है या नहीं? होता है सर. होता है. तो अब वहां पे क्या है, शूज आर मेकिंग योर पर्सनैलिटी. तो इन अभी इसका क्या इडियम है कि द मैन हु वियर्स द शूज नोज वेयर इट पिंचेज. अब इसका मीनिंग बताओ. द मैन हु वियर्स द शूज, एक मुहावरा दिया मैंने आपको, इडियम दिया, नोज वेयर इट पिंचेज. बोलिए. जो आदमी जूते को पहना होता है उसे ही पता चलता है कि वो जूता उसे कहां काट रहा है. तो जब आप अपनी पर्सनालिटी, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफरिंग योर पर्सनालिटी इनटू अदर्स व्हाइल लिसनिंग टू द पर्सन, पुटिंग योर माइंडसेट इनटू दैट माइंडसेट वेयर यू आर लिसनिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन. आपको इसको दिखाने के लिए मैंने अभी गूगल में कुछ इमेजेस सर्च की. ठीक है, आई विल ट्राई टू शेयर दैट पेज आइदर, कि वो इमेजेस, इसको हम अभी अनशेयर करके थोड़ा सा वो स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे. तो अभी आप देखिएगा इमेजेज ऑफ एम्पैथी. तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? देयर आर मल्टीपल इमेजेज, यू कैन सी. पर्सनालिटी ट्रांसफर, इस इमेज को देख के लग रहा है अभी मैंने जो हाईलाइट किया थोड़ा. आर यू एबल टू सी दैट इमेज और नॉट? Yes, sir. ये इमेज दिख रहा है ना, डिफाइनिंग empathy. When let us focus on certain other images. ये देखो जरा. Yes, sir. इस इमेज को आप देख पा रहे हैं? Are you able to see this one? ये Yes, sir. so इसमें क्या ट्रांसफर दिख रहा है इमेज में? एवरीथिंग. आपने दो इमेज है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देयर, एंड wavelength is, or because of the lighting, and it is shows that the way of the image that they are at equal mindset, है ना? They are in the equal mindset. Here this image will be showing you they are trying to be equal, but this one they are in the equal mind frame. So that way you will realize that how empathy can be projected. How these are, there are certain images. I highlighted another one.
Clear? This is what empathy means. Here, compassion with compassion and compassionately, अगर आप hear कर पा रहे, connect, listen, feeling, then you will find that you can have a better listening. So this listening on professional front is considered to be better listening. This is empathy. अरे ये देखो, can you see this image? See the beauty of this image. इसमें क्या है? Two different persons are standing. ठीक है, लेकिन एक के माइंड में दूसरा वाला है, पूरा ट्रांसपोर्टेड है, और दूसरे के माइंड में पहला वाला है. आप इसको देख पा रहे हैं? दिस इमेज Yes, sir. सच अ ब्यूटीफुल इमेज. आप ये देखिए, अब एम्पैथी का ये मीनिंग देखो कितना प्यारा है. लेट मी ओपन. ये इमेज आपको जो आया ना, एम्पैथी इमेज, कि देखो कि द मैन विथ ब्लू कलर is having the man with green color in his mind, and the man with green color is having the man with blue color in his mind. This shows the clear meaning of the empathy. तो अभी आपको पता चला, are you able to realize that what is empathy? आप इसको थोड़ा समझ पाए हैं, महसूस कर पाए? Are you able to feel it? Yes, sir. As per this figure, empathy means both person understand each other properly and completely. हाँ हाँ, यस. तो इसमें जब आप प्रोफेशनली भी सुनिए लाइफ में, और वहां पे मैंने क्या कहा था कि द मोर विल यू लिसन द लकियर विल यू गेट. जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतने लकियर आप होते जाएंगे. तो अभी आपने क्या देखा कि दिस इज एम्पैथेटिक लिसनिंग. एक और टाइप ऑफ लिसनिंग है इससे भी बेहतर, बट वो प्रोफेशनल वर्ड में नहीं काम करता. वो लिसनिंग आपका प्रोफेशनल के लिए नहीं, प्रोफेशनल के लिए बेस्ट यही है. दिस टाइप ऑफ लिसनिंग is considered as the best form of listening. हम लिख रहे हैं, आपको दिख रहा है बेटा? बेटा आप Yes, sir. listening for professionals. अब एक इंडियन वर्जन है उसका लिसनिंग का. Got it? What is that Indian version? That talks of holistic listening. ठीक है. How many of you could attend the session by Brahma Kumaris? बोलिए. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एमबीए के लिए सेशन हुआ था, आप अटेंड किए थे? जो इनवाइटेड लेक्चर था. होलिस्टिक लिसनिंग इज व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट, और ये आपकी लाइफ का बेस्ड लिसनिंग है. व्हाट इज दिस? Attempt to listen with your mind and body both. क्या मतलब इसका? क्या मतलब? You can ask me a question. Sorry, when you tell mind and body both, what does it mean? बोलिए. What does it mean when you talk about listening with your mind and body both? ये क्या है बेटा? It means listening carefully. Yes, carefully नहीं. आपने सांप को देखा है? लोग कहते हैं सांप को सुनाई नहीं देता. Snakes do not listen. आपने सुना है ना कि snakes do not listen. वो क्या करते हैं?
their body is so sensitive that they feel the vibration. बॉडी से लिसन कर लेता है. और similarly, if we are focusing with mind and body, तो जब आप अच्छे लिसनर होंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा आगे की ओर झुक जाएगी सुनते वक्त. योर बॉडी विल बेंड अ लिटिल फॉरवर्ड. चेयर पे बैठे होंगे तो भी थोड़ा सा बॉडी आगे, और एक चेयर पे एकदम पीछे जाके सुन रहा है तो वो क्या होगा? बोलो. आप बोल रहे हो और सामने वाला चेयर पे पीछे की, बस वो खाली टाइम पास कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है. और उसका भले से वो एम्पैथेटिक भी हो, उसकी बॉडी कुछ और सिग्नल दे रही. ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज लिसनिंग विथ हिज माइंड, बॉडी, नॉट विथ बॉडी. ठीक है. एंड इवन माइंड, बॉडी एंड सोल सब कुछ जब लगा दोगे तो आप बन जाओगे होलिस्टिक लिसनर. क्या? ऐसे लिसनिंग कौन करता है? कभी कभी आप करते हो. एवरीबडी डज, बट समटाइम. सो एट दिस पॉइंट आई वुड लव टू क्लोज द लेक्चर. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क. वी कैन टेक अप 1 or 2. कुछ भी सवाल है? क्योंकि अगला लेक्चर आपका ऑलरेडी आ गया है. वो टीचर मेरे को गालियां दे रहा होगा. वो भी मेरे लिए, आप लोग भी अब एंटीपैथेटिक हो रहे होंगे कि नाउ टाइम इज फॉर डिफरेंट लिसनिंग. नो सर. अब जो है बहुत हो गया सिंपैथेटिक. No, sir. Let us, if you have any question, feel free to ask. कुछ भी, if you want any query or you wanted to listen to anything, you want to, if you have any doubt. Today I adopted different method of teaching. I at the same time shared a plain window page and where I started writing so that you may have some idea of, and at the same time, though the lecture might be a slow process, moving slow a bit, but I did it for the visual learners, those who learn with seeing that something is being written. And so listening and auditory process, both I try to target. Thank you so much, my dear students. Have a wonderful day. If you don't have any question, कुछ पूछना नहीं है आपको तो बोलो. Thank you, sir. Sir, one query. Yes, please. Sir, you have divided listening, partial listening, selective listening. Sir, on the basis of listening, what you have divided? On which basis? On which it's not I have divided. Yes, Clear? sir. It's these things are divided by certain scholars of all times. Your question is of partial and selective. ये आप दोनों को कंफ्यूज कर रहा है. जैसे मान लो एक लेक्चर चल रहा है, अभी ये लेक्चर चल रहा है. No, sir, not that. देखो एग्जाम्पल देने दो बेटा, तभी तो समझाएंगे. किस बेसिस पे, बेसिस तो बता रहे हैं आपको कि अगर आप एक पूरे रनिंग कंटेंट का एक पार्ट ही सुनते, वो पहला पार्ट हो सकता है, सेकेंड पार्ट हो सकता है, 1/10वां पार्ट हो सकता है, 1/100वां हो सकता है, और या फिर हाफ हो सकता है, उसका क्वार्टर ऑफ द स्पीच हो सकता है. जितना भी एक टाइम तक, जैसे 20 मिनट की स्पीच में 5 मिनट आपने सुन लिया, वो पार्शियल है. कोई भी 5 मिनट आपने सुन लिया. 20 मिनट स्पीच यू कुड लिसन ओनली एनी पार्ट ऑफ 5 मिनट, वो पार्शियल है, आंशिक सुना आपने. लेकिन सेलेक्टिव में क्या है कि जिसको आपने वेट दिया उसे सुना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो आप सुनना ही चाहते थे बस वही सुने. सेलेक्टिव थे आप. पार्शियल में आप चाहते नहीं चाहते का सवाल नहीं है, आपने सुना ही 5 मिनट 20 मिनट के स्पीच, तो आप पार्शियल लिसनर हुए. यही बेसिस है उसका. सेलेक्टिव में जिसका वेट इंपॉर्टेंट है, जो आपको, यू सेलेक्टेड दैट यू विल बी लिसनिंग इट विद. आप पूरे लेक्चर के दौरान थे 50 मिनट 100 मिनट, लेकिन आपने जो है सेलेक्ट किया कि ये टॉपिक, जैसे आपने सेलेक्ट किया कि ये क्वेश्चन पार्शियल और सेलेक्टिव. व्हाई इज इट सो? थ्रू आउट द लेक्चर आपके दिमाग में ये बार बार हिट कर रहा था कि ये पार्शियल और सेलेक्टिव तो सिमिलर लग रहा है,
इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहे। इसका बेसिस क्या है? दिस क्वेश्चन केप्ट हॉन्टिंग यू। तो आप बल्कि पार्शियल और सेलेक्टिव लिसनिंग वाले पोर्शन के प्रति आप जो है एम्पैथेटिक थे या होलिस्टिक थे। गॉट द पॉइंट? तो पार्शियल में एक पार्ट, पूरे कंटेंट का होल, पार्ट ऑफ द होल, जैसे 1/2, 2/5, कुछ भी उसके अंश और हर पार्ट होता है ना, वो कहते हैं जो। तो आपने उसको उसके पोर्शन, सर नहीं बेटा, मैं ये मतलब मैं क्लियर कर पा रहा हूं कि नहीं? आपको अभी भी डाउट है तो पूछो। ये आपका क्वेश्चन सही है, योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। शायद से इससे दूसरों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी, अदर्स विल आल्सो गेट सम क्लैरिटी। क्वेश्चन इज नाइस, वेरी नाइस Sir, I क्वेश्चन। think तो कुड यू गॉट द आइडिया? अभी भी उसका जवाब आपको मिल पाया कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आप पूछ रहे थे कि उसका बेसिस आपको समझ में आ गया बेटे? बेसिस यही है कि पार्ट ऑफ द होल वो पार्शियल है। होल 100% हो सकता है, आपने 2% चुना, 4% चुना, 20% चुना, 50, 70 एटसेट्रा, 90% भी सुना तो 9/10 ही हुआ, 9/10 आपने सुना। बट अगर सेलेक्टिव है तो आपने उसमें सेलेक्ट किया कि ये वाला पोर्शन जो है मुझे सुनना है। बेटा समझ आया? सेलेक्टिव में आपकी चॉइस है और पार्शियल में आपके कई रीजन हो सकते हैं कि आप लेट हो सकते हो वहां पहुंचने में। कहते कि अरे हम तो 5 ही मिनट बस सुन पाए, पूरी स्पीच थी, थोड़ा ही सुन पाए। अब जो इलिटरेट आदमी बोलता है थोड़ा सुन पाए, आप बोलते 5 ही मिनट सुन पाए, ठीक है। अब 5 ही मिनट क्यों सुन पाए? वहां बैठे हुए भी आपके सिर में दर्द हो रहा है, बोले हम शुरू में गए 5 मिनट सुने वापस आ गए। देयर में भी मल्टीपल रीजन आपके पार्शियल होने के। पार्शियल यहां पार्ट से बना है, पार्ट। पार्शियल बने वो नहीं कि आप उसके प्रति पार्शियल हो रहे हैं, जो कहते कि आपका पार्शियलिटी वाला पार्शियल नहीं, पार्ट वाला पार्शियल। गॉट द पॉइंट? yes, sir. थैंक यू बेटा। और भी कोई क्वेरी है आपके पास? एनीबडी एल्स? सो बेस्ड काइंड ऑफ प्रोफेशनल लिसनिंग में क्या लिखोगे आप इन एग्जामिनेशन आंसर? Empathetic listening. कौन सा बेटा? तो empathetic बताए थे ना आप? हाँ, एम्पैथेटिक लिसनिंग, लिसन विथ एम्पैथी। बट पर्सनल लाइफ के लिए क्या आपने सीखा उससे भी बियॉन्ड? वो मैंने जोड़ा है, वो मेरा एडिशन है, होलिस्टिक लिसनिंग। Holistic listening, yes, sir. Yes, that's it for the day. Have a wonderful time. Let me stop recording and close this. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank Okay. you, sir. Okay, Thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir.